Now children, here we will try to understand subtraction of 3-digit number with borrow. It is same as subtraction of 2-digit number with borrow. As you have already learned na, subtraction of 2-digit number with borrow you have already learned. तो सेम आपको यहाँ भी वही करना है, बस फ़र्क क्या है कि here we are subtracting, here we have 2 3-digit numbers. बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसेस आर द सेम as we have already done with the 2-digit numbers. Now here first we will learn, today we will learn only subtraction of 3-digit number with changing tens. Okay, that means we will take borrow from the tens place digit, or we will take borrow 110 and then we change it to 10 ones. Okay, तो यहाँ हम सिर्फ चेंजिंग टेंस ऐसा सब्ट्रैक्शन सम को करेंगे आज, जिसमें सिर्फ हमें टेंस से बोरो लेना है और उस टेंस को 110 को हम वंस में चेंज करके फिर अपना सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे. यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली बाय सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल. ओके, सो हियर 2 numbers are here. The 2 3-digit numbers are here. The first one is 368 and the second smaller number or the subtrahend is 139. Okay, now let us start subtraction. As usual we will start subtraction with the ones place digit first. So here we have to subtract this 9 from 8. आपको 9 निकालना है 8 में से. You have to take away 9 from 8. So is it possible children? No, you can't take away 9 from 8 unless this 8 takes borrow from this 610. तब तक आप इसमें से 9 चॉकलेट नहीं निकाल सकते जब तक ये 8 किसी से बोरो लेकर के अपनी संख्या को बढ़ा नहीं लेता है ना. जब ये बोरो लेगा तो क्या होगा, ये नंबर्स बढ़ जाएगा, तो फिर हम इसमें से 9 निकाल सकेंगे. ओके, सो नाउ दिस 8 विल टेक बोरो फ्रॉम 610. अब ये 610 इसके पास है, इट विल गिव 110 एज बोरो. कितना देगा ये? 110. एंड दिस 110, ये जो 110 है यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, वी हैव टू चेंज. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेंज दिस 110 एज 10 वंस, क्योंकि वो वंस प्लेस पे जा रहा है तो मुझे टेंस को वंस में कन्वर्ट करना, चेंज करना पड़ेगा. सो हियर 110 व्हेन इट विल गिव बोरो 110, दिस 110 विल चेंज हियर 10 वंस. नाउ हियर एट 10th रो में हमारे पास 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 टोटल विल गेट 18. 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 18. Now we can subtract 9 from 18. But before that children, one thing we have missed. What is that? Is when this 6 will give borrow to this ones place digit, तो this 6 will get 1 less. ये जो 6 है जैसे ही बोरो देगा इसको 1 कम कर देना है ना, इसको मिस नहीं करना. ये 6 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ओके, now here we will subtract this 9 from this 18. So now again children we will count by using our fingers mark. So we will start our counting after 9. तो 9 के बाद क्या आता है children? 10 and we will count till 18. So 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Till here we have counted. Now we will count how many fingers mark we have counted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 fingers mark. That means when we subtract 9 from 18 we will get here 9. Now here after 1st row we will subtract the 10th row. In 10th row children we have to subtract 3 from 5. So after 3 it comes 4. So let us start counting from 4 and count till 5. 4, 5. So only 2 fingers mark we have counted.
So here when we subtract 3 from 5, we will get here 2. Okay, now in 100 row we have 3 and 1. So here we have to subtract 1 from 3. Again we will start counting just after 1. तो 1 के बाद क्या आता है? 2 और 2 और 3. So how many fingers mark we have counted, children? So 2, 1, 2. Only 2 fingers mark we have counted. So here we will get 2. Okay. So when we subtract 139 or when we take away 139 from 368, we will get 229. Okay. So same here, we will subtract this. One more question, let us solve. So here also we need to take borrow from this tens place digit, and then we change 1 tens to 10 ones. Okay, as usual. So always सबसे पहले ones place digit को subtract करेंगे. So here also we have to subtract 9 from 8. So again same जैसा मैंने अभी पिछले में किया था, तो ये पहले borrow लेगा, तो ये 1 जैसे एक borrow देगा. इसके पास तो एक ही था, 1 था only. When it will give 110 as borrow, this 110 will change here as 10 ones. Okay, we will change this 110s into 10 ones, and here it will get only 0. 1 से एक कम क्या हो जाता है? 0. अगर आपके पास एक टॉफ़ी है और वो भी कोई ले गया, तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा. So here after giving borrow, it become 0. So now here at ये 10 plus 8 मैच करके कितना हो गया? 18. Now we will subtract 9 from 18. Here also we will get 9 as we have done before, just before. And here in tens row, children, we have to subtract 0 from 0. So here also we will get 0. Now after tens row, we will subtract the 9s row. 100 after tens row, we will subtract the 100 row digit. So here when we subtract 7 from 9, we will get here 2 as our answer. Okay. So all of you will solve all the questions of page number 45 and 46 same as I have solved here.